Yes, it is perfect. So cost of new common stock क्या है? So next expected dividend plus expected growth in earnings by current stock price minus floating cost, flotation cost, floating cost. The costs of floating the share in the market, जो मैंने आपसे कहा, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन का मेरे को खर्चा लगता है, प्रिंटिंग का मेरे को खर्चा लगता है, या लीगल कंप्लायंस का मेरे को खर्चा लगता है, बिफोर आई कैन रिलीज अ शेयर इन द मार्केट, खर्चे लगते हैं कंपनी के और करोड़ों में लगते हैं। तभी आईपीओ करना कोई आम बात या आसान बात नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ कि शेयर बिकेगा या नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि वहां तक पहुंचने के लिए कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन फ्लोट योर आईपीओ। Sir, can you hear me now? हाँ, आई कैन हियर यू नाउ। Yeah, sorry, sir. I was not able to unmute myself. So I just wanted to ask, in this cost of new common stock, the formula states, the denominator states current stock price. So is it the current stock price or is it the issue price that we are talking about here? So the idea is it says current stock price because currently अगर आप for example it's a new stock that you're issuing and it's been a week since you issued it and then you're calculating it, तो वो current stock price इस sense में कह रहा है कि जो अभी stock price market में है, because again the issue price is not the final price. The issue price is just the price at which the underwriting firm feels comfortable selling the shares. Right. So it's not really a market price. It's not a price that is accepted by the customer all the time. Sometimes it increases, sometimes it falls off. ये वाली बात है, इसलिए it says current stock price.